Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the next two classes of superclass Tetrapoda, that is Reptilia and Aves. So let's move to the classboard. So now students, class Reptilia. और द रेप्टाइल्स जिनको हम रेंगने वाले जानवर कहते हैं, ठीक है, जो पेट के बल रेंगते हैं, और दे आर कंसिडर्ड टू बी evolved from the amphibians as per the history of evolution. The reptiles are thought to be evolved from amphibians. Means के इनके जो ancestors हैं, they are amphibians, या both of them they have common ancestors. But the difference is that amphibians still they remain some part in the water, but the reptiles they are solely on the land. The reptiles live solely on land. Okay? और इनके कुछ जो अडेप्टिव फीचर्स, जो बेसिक फीचर्स हैं, इनके जनरल बॉडी प्लान्स के वाले से उनको डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रेप्टाइल्स have developed copulatory organ that is meant for internal fertilization, which is called penis. In the males, for internal fertilization. तो फर्टिलाइजेशन के अतबार से देखा जाए फिशेस और एम्फीबियंस उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. Because of the presence of the copulatory organ. And number two, is an important feature among them. They have scaly skin, which is meant for living in dry environmental conditions. तो ये जिस environment में रहते हैं, आमतौर पर वहाँ पर कुछ conditions थोड़ी harsh होती हैं. There is scarcity of water, तो उसको prevent करने के लिए अल्लाह ताला इनको dry और scaly skin दी है, ठीक है, scaly. और तो वो थोड़ी शाइनी होती है, जैसे कि आप स्नेक के ऊपर देखें तो शाइनी स्किन, इसी तरह से क्रोकोडाइल्स के ऊपर देखें तो हार्ड और स्केली और शाइनी स्किन इनके ऊपर मौजूद होती है. नंबर 3,
they are amniotes. और इससे प्रीवियसली मैं ये डिफरेंस बता चुका हूँ कि जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस अगर तो बन जाएं तो उनको एमनियोट्स कहते हैं, और अगर ना हो तो उनको एन एमनियोट्स कहते हैं. तो फिशेस एंड एम्फीबियंस दे आर एन एमनियोट्स, while the reptiles, birds and mammals, they are amniotes, means that is they possess embryonic membranes namely that are amnion, chorion and allantois. Clear? And now as far as their eggs are concerned, their eggs have shells which are leathery and resist ड्राइनेस. और आमतौर पर इनके जो एग्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं. ठीक है. एंड यूजुअली elongated and contain a large amount of yolk. यॉक जर्दी को कहते हैं, तो इनके अंदर उसका कंटेंट ज़्यादा होता है इनके एग्स में. नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर respiration, they respire through lungs. Clear? और इसी तरह से another feature in them, that is their heart, जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. इनके 4 चैम्बर हैं, लेकिन एक यहाँ पर अभी एक एक्सेप्शन है, वो भी उसको डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मतलब तो 2 एट्रिया, 2 ventricles, but the ventricles are not completely partitioned. But ventricles are not completely partitioned, except सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वह है क्रोकोडाइल्स. एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स which have completely partitioned ventricles, but it is a reptile. ठीक है. तो 4 चैम्बर इस तरह से हार्ट के, एट्रिया मुकम्मल तौर पर पार्टीशन है, लेकिन आम तौर पर इनके जो वेंट्रिकल है वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन है, मतलब स्टिल देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, लेकिन कम मिक्सिंग है एज कम्पेयर टू द एम्फीबियंस.
बट द हार्ट ऑफ द क्रोकोडाइल इट इज कंप्लीटली पार्टीशन, उसमें चारों खाने अलग अलग से मौजूद हैं. नाउ अबाउट देयर sexes. The sexes are separate. Clear? With paired gonads. Means a pair of testes in males and a pair of ovaries in females. And fertilization. यहाँ पर याद रखिएगा, fertilization is internal due to the presence of the copulatory organ. But development, लेकिन उसके अंदर जो बच्चे के बनने का अमल है एग के अंदर, is external. That is external. Clear? So that is their way of fertilization and development. Now their limbs, they have limbs 4 in number, इसलिए इनको tetrapods कहा जाता है. Meant for locomotion, and उसमें कुछ ऐसे भी हैं, some of them do not have any limb, किसी, और कुछ ऐसे भी जिनमें कोई भी लिम्ब मौजूद नहीं है, like in snakes or slowworms. Clear? और जहाँ तक इनकी थर्मो रेगुलेशन की बात है, they are cold blooded. They are cold blooded. Means they are poikilotherms. और poikilotherms मतलब कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते. सो दैट इज़ वाई ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ है, जो जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वैसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है. इसी वजह से लिजर्ड्स, स्नेक्स, दे यूज टू हाइबरनेट. ठीक है? एंड ऑल्सो यूज टू हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर. इसलिए आपको जो लिजर्ड्स हैं और स्नेक्स हैं ये सर्दियों में आम तौर पर नज़र नहीं आएंगे. क्लियर? और एग्जाम्पल्स, इसमें स्नेक्स, slowworms, and the crocodiles, and the lizards are the examples of these the reptilians. And कुछ MCQ से रिलेटेड है इसी क्लास से, उसको जहन में रख लीजिए कि एक तो उन्होंने फ्लरिश किया है थ्रू द Mesozoic era. The reptiles flourished during Mesozoic era, और इनमें से टोटल जो मोर देन अ डजन लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन जो इनमें से हैं, इनमें से सिर्फ 4 लाइन्स हैं जो कि जिससे ये आगे जो है वो एक्सटेंड हुए. और द प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स, ये MCQ के लिए ये भी मार्क कर लें. प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स, जो आज की दुनिया में हमारे पास रेप्टाइल्स मौजूद हैं, उनमें कौन कौन से हैं? आर फर्स्टली snakes and lizards,
Secondly, Tuatara, या जिसको स्फिनोडॉन कहते हैं, ऑफ न्यूजीलैंड, या जिसको हम सादा लफ्ज़ों में वो गिरगिट भी कहते हैं, कैमेलियन भी कहते हैं, ठीक है, कैमेलियन। तो ये सेकंड लाइन है जो कि अब तक बहुत कम चेंजेस के साथ मौजूद है अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरिस्ट। एंड थर्डली आर क्रोकोडाइल्स, जिनको ऑफ शूट समझा जाता है जुरासिक टाइम्स में से, ठीक है, यानी कि जो जुरासिक एनिमल्स थे लाइक डायनासोर्स, उनमें से एक ऑफ शूट समझा जाता है क्रोकोडाइल्स को। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके MCQs पॉइंट है उसे अपने जहन में रखने हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्लास एवीज और एव्स, जिनको हम कहते हैं बर्ड्स, तो पहले कुछ थोड़ा सा इनकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात कर लें। जो बर्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट, द बर्ड्स have evolved from reptilian ancestors, from reptilian ancestors। इसी तरह से मैमल्स के बारे में यही कहा जाता है कि उनके भी एंसेस्टर्स जो थे वो रेप्टाइल्स थे, द मैमल्स। और इसमें द अर्लीस्ट नोन फॉसिल, द अर्लीस्ट नॉन fossil of birds. So the earliest known fossil of birds is of Archaeopteryx. और ये जो फॉसिल मिला है, इट इज द फॉसिल इज of about the size of a crow, about the size of crow, कौवे के साइज का, ठीक है। और it had a small skull, छोटी सी स्कल है इसकी, with jaws extended into beak, इसके जो जॉज हैं उससे वो एक्सटेंड होकर चोंच बना रहे हैं, हैविंग टीथ, और उसके अंदर दांत भी मौजूद हैं जो कि मॉडर्न डे बर्ड्स में नहीं है, which modern day birds do not have, clear। और इसकी जो स्कल है, the skull had large eye sockets, two wings, दो wings हैं इसके पास, each wing having three claws, okay? और इसी तरह से कुछ दिखता है। और
अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरिस्ट यहीं से आगे जो बर्ड्स की जो नस्लें हैं वो चलती हैं। और अब आते हैं इनके कुछ कॉमन फीचर्स की तरफ। नाउ देयर सम फीचर्स। So number one, their body is streamlined. Their body is streamlined. जैसे फिशेस में मैंने आपको बताया था, स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या मुराद है कि इनमें जब ये उड़ते हैं हवा में तो इनको कम से कम रेजिस्टेंस जो है शो होती है, ठीक है, फेस करना पड़ती है। इस तरह से जो फिशेस हैं उनको कम से कम वाटर रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ती है। एंड इज डिवाइडेड इनटू into 4 regions। 4 regions हैं इसकी बॉडी के। That is head, neck, trunk and tail। ये इसकी 4 regions है बॉडी के, ठीक है। head, neck, then trunk and then tail, ठीक है। So these are the 4 regions। Number 2, they have epidermal, exoskeleton of feathers। जो इनके पर होते हैं वो एक्सोस्केलेटन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड लेग्स बियरिंग स्केल्स। और इनकी अगर टांगे देखें तो इनके ऊपर स्केल्स होते हैं, शाइनी स्केल्स, हार्ड स्केल्स, ठीक है। देयर एंडोस्केलेटन, इनका जो एंडोस्केलेटन है यानी हड्डियों से बना हुआ है, एंडोस्केलेटन is made up of bones that have air spaces। और उन हड्डियों के अंदर एयर स्पेसेस हैं, ठीक है, ताकि स्केलेटन को लाइट वेट बनाया जा सके और ताकि आराम से उड़ सके। इन ऑर्डर टू मेक skeleton lightweight। Clear? Or if we talk about their respiratory system, their respiratory system have lungs which further have air sacs। उनके आगे फर्दर एयर सैक्स होते हैं। क्लियर? फॉर एफिशिएंट ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। चैप्टर नंबर 13 में इसको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। एंड they have urinary system। इनके पास यूरिनरी सिस्टम मौजूद है, बट विदाउट ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, इसी वजह से दैट्स वाई they have semi-solid urine।
तो इनका जो यूरिन है वो क्लोएका के साथ मिलकर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो वहीं पर ओपन हो रहा होता है, इसलिए जो इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो सेमी सॉलिड होती हैं, ठीक है, सॉलिड नहीं होती हैं, लिक्विड भी नहीं होती हैं, बल्कि इन बिटवीन, क्योंकि उसमें यूरिन भी मिक्स है और उसके फीसेस भी मिक्स होती हैं, ठीक है। They do not have teeth, इनके दांत नहीं होते, in beaks, so they have gizzard. They have gizzard for crushing the food. For crushing food. आपने मुर्गी देखी होगी, क्योंकि वो भी बर्ड है, तो उसमें हम कहते हैं ना पोटा, कलेजी पोटा का नाम सुना है, जो पोटा होता है उसका, सो उसमें फीसिस नहीं होते, बल्कि उसमें खाना जो होता है क्रश होता है, ठीक है। उसकी रीज़न, क्योंकि इनके मुंह में दांत नहीं होते, तो फूड की क्रशिंग कहाँ पे होगी, इस गिजर्ड के अंदर, जिसको पोटा कहा जाता है, ठीक है। और नंबर 7, their skull have large eye sockets. अगर आपको भी किसी बर्ड का स्कल देखें, लेट्स सपोज दिस इज अ स्कल, तो इसमें बड़े बड़े आई सॉकेट्स हैं, ठीक है, जो कि इसके स्केलेटन को मजीद लाइट वेट बना देते हैं, ठीक है। हमारी स्कल के अंदर छोटे छोटे आई सॉकेट्स हैं, जिसमें हमारे आई बॉल होते हैं, इनके आई सॉकेट्स बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, ताकि मजीद बोन कंटेंट कम हो सके और ये आसानी से हवा में लिफ्ट हो सकें, ठीक है। फॉर मेकिंग skeleton lightweight. क्लियर। और इसके अलावा इनके अंदर इनका जो वॉइस ऑर्गन जो है इनकी, द ऑर्गन ऑफ वॉइस इन बर्ड्स इज कॉल्ड सारिंक्स। उसे सारिंक्स कहते हैं। हमारे अंदर वॉइस ऑर्गन होता है लेरिंक्स, ठीक है, इनके अंदर होता है सारिंक्स। और हमारा जो लेरिंक्स है वो ट्रेकिया के टॉप पे है, इनका जो सारिंक्स होता है दैट इज एट द बॉटम ऑफ ट्रेकिया, जहां पर ब्रोंकाई बन रहे होते हैं, यहां पर हियर इज सारिंक्स, क्लियर, लोकेटेड at the base of trachea. At the base of trachea. Number 9. The sexes are separate. Sexes are separate, and in most of the birds, अगर हम फीमेल्स की बात करें, इन फीमेल्स ओनली वन ओवरी इज फंक्शनल एक्सेप्ट ईगल। उनमें दोनों ओवरीज फंक्शनल होती हैं, whose both ovaries are functional. Clear? And according to, as per their thermoregulation, so birds are warm-blooded. They are warm-blooded, और warm-blooded को कहते हैं होम्योथर्म्स।
होम्योथर्म मतलब कि दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बाहर जैसा मर्जी टेम्परेचर हो, अंदर इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्म्स कहा जाता है। इसमें सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स शामिल हैं, ठीक है। बाकी से प्रीवियस तीनों क्लासेस फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स वो कोल्ड ब्लडेड थे, मतलब कि वो पोइकिलोथर्म्स थे, ठीक है। इनमें कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं, सम बर्ड्स have lost the power of flight। उनको रनिंग बर्ड्स कहा जाता है। They are called running birds। वो उड़ नहीं सकते, ठीक है, वो सिर्फ चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, जैसे शुतुरमुर्ग, जैसे कि कीवी, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज रनिंग बर्ड्स। वो उड़ नहीं पाते, ठीक है, सिर्फ वो भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और इनके जो लिम्ब्स हैं, देयर 4 limbs आर फॉर फ्लाइंग, वो उड़ने के लिए, एंड हाइंड लिम्ब्स आर फॉर वॉकिंग, रनिंग, पर्चिंग मतलब खड़े होने के लिए, एक्सेट्रा। तो ये इनकी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि इनके लिम्ब्स के एतबार से इंपॉर्टेंट हैं। और जहाँ तक बात है इन एग्जाम्पल्स की, सो एग्जाम्पल्स आपको पता है ये बर्ड्स की, जितने इतने सारे बर्ड्स आपको पता है। एग्जाम्पल्स में आप पैरट एंड ईगल, स्पैरो, etc. So a lot of examples are there regarding the birds. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज क्लास मैमेलिया। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।